हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम्योस्टेसिस 99। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी क्वेरी डिस्कस करने वाले हैं जो हर साल हर बैच में स्टूडेंट्स को रहती है। सो आई थॉट लेट्स मेक वीडियो ऑन इट एंड वो क्वेरी है, इट इज रिलेटेड टू कंप्लायंस। सो कंप्लायंस, डिस्टेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है एंड हाउ दे आर एप्लीकेबल टू वेरियस टिश्यूज इन आवर बॉडी, how their principles are associated with their tissues functioning. So ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं. So without wasting any time, let's get started. So यहाँ पे हमारे पास है तीन टर्मिनोलॉजीज: डिस्टेंसिबिलिटी, कंप्लायंस एंड इलास्टिसिटी. Right? Distensibility is a word that gives you information about the ability to expand. Distensibility is ability to expand in the presence of external pressure or force. तो जब भी आप, जैसे ये बलून है, इस बलून को अगर मैं और ग्लो करती हूँ, it will increase its size. So increase in its size is called distension, distensibility, right? डिस्टेंसिबिलिटी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम. सो ओरिजिनल वॉल्यूम इज द फैक्टर विच इज गोइंग टू अफेक्ट इनवर्सली द डिस्टेंसिबिलिटी. जो आप कभी बलून ब्लो करते हैं तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि एज द बलून बिकम्स बिगर एंड बिगर, its एबिलिटी टू एक्सपांड मोर इज लेस. सो डिस्टेंसिबिलिटी जो है, ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डिस्टेंसिबिलिटी कम होते जाएगी. ये इसका हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन. अब डिस्टेंसिबिलिटी अगर किसी भी वेसल वॉल में या किसी भी वॉल में है तो वो उस वॉल को कंप्लायंट भी बनाती है. So compliance basically is what? Compliance is also the distensibility. Because of distensibility, the compliance is coming. But compliance works in both direction. Both direction means in the direction of deflation. मतलब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इस बलून का साइज बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर. सो कंप्लायंस वर्क्स इन बोथ डायरेक्शन. अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ेगा वेसल का. अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो वेसल का वॉल्यूम भी कम होगा. So inflation and deflation in both direction compliance works. So compliance is change in volume upon change in pressure. अच्छा, अब compliance और distensibility का जो relationship है, what is that? अगर मैं इसकी जगह ये change in volume upon change in pressure, this is your compliance. So distensibility is equal to compliance upon original volume, right? So compliance is equal to distensibility into original volume. ये हो गया. These two are the factors determining compliance basically, right? अब हम आते हैं next उस पे term पे, that is elasticity. Elasticity is the property of any matter which has the tendency to return back to its original position when the external force is removed. So elasticity का main जो गोल है वो क्या है? कमिंग बैक टू ओरिजिनल. कमिंग बैक इज इलास्टिसिटी. तो जितना इलास्टिक टिश्यू होगा उतना ही जल्दी वो स्नैप बैक करेगा अगर एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स रिमूव हो गया तो अभी बलून के केस में अगर ये बलून ऑलरेडी ब्लोन है एंड आई रिमूव एयर आउट ऑफ इट, दिस वुड बी लाइक कंप्लीटली डिफ्लेटेड. इट वुड come back to its original state. How fast it comes back to original state, that is the elasticity. जितनी ज्यादा elasticity होगा उतना ही ज्यादा टिश्यू, अगर हम टिश्यू की टर्म्स में बात करें, टिश्यू अपनी पोजीशन में आएगा. तो इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कंप्लायंस को अफेक्ट करता है. जितना ज्यादा इलास्टिक टिश्यू होगा उसको डिस्टेंड करने में उतनी ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? एंड जितना ज्यादा इलास्टिक टिश्यू होगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में उतना ही जल्दी आएगा. सो दिस इज द वे दीज थ्री टर्म्स आर इंटररिलेटेड एंड their meaning we have discussed. Now we'll move to the tissues where the principle of these terms are applicable.
So first of all, the compliance of vascular system, ये आप हेमोडायनामिक्स में compliance पढ़ते हो, तो वो किस सेंस में applicable है? So vascular system को we divide broadly into two, the arterial system and the venous system. So arterial and venous system they both have some structural differences. So walls of the arteries are thicker walls. They are more in elastic tissues of mainly of big arteries. They are thicker. So more in elastic, and they have thick muscular layer. Smooth muscle layer is thick. So because of these characteristics, the arterial system becomes the high resistance, and because of that, it becomes the high pressure system. Okay, and high resistance and high pressure, so it maintains the flow. The capacity to hold the blood in these vessels is less, right? Whereas in venous system, what happens here, the walls are thin, thinner walls are more distensible. Okay, so thin walls, elasticity is less, and the muscular coat in the veins is less thicker as compared to arterial walls. So because of these characteristics, the venous circulation is a low pressure, low resistance system. Okay, because of this, it can accommodate larger amount of blood so that its capacity is high. So इसके लिए veins को बोलते हैं distensible system, high capacitance system. Arterial system को बोलते हैं high flow, high pressure system. तो अब इसके हिसाब से अगर हम कंप्लायंस देखें दोनों का डिफरेंस क्या आएगा कंप्लायंस में? कंप्लायंस इज व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर. तो ये जो डायग्राम है आपका लेफ्ट साइड में, ये गाइटन में इस तरह से दिया हुआ है कि इन्होंने एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम रखा है एंड वाई एक्सिस पे रखा है प्रेशर. नॉर्मली जब हम कंप्लायंस हम जब प्रेजेंट करते हैं तो जो प्रेशर है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें तो इजीली समझता है. तो अभी मैं यहाँ पे यही डायग्राम एक्सिस चेंज करके ड्रॉ करने वाली हूँ. सो एक्स एक्सिस पे आई एम पुटिंग प्रेशर एंड वाई एक्सिस पे आई एम पुटिंग द वॉल्यूम. Pressure is in millimeter mercury, volume is in ml. Okay, and here from 0 it starts here pressure 20, 40, 60, 80, 100, 120. Okay, and on y-axis the volume, let's suppose it starts with 500 ml, then 1000, 1500, 2000, 2500 and 3000 and 3500. Okay, if I draw this, the change in volume per unit change in pressure means compliance for arterial system. Arterial system का अगर हम mean blood pressure we consider 100 millimeter mercury. At this pressure, the blood volume present in the arterial system that is around 700 ml. So at इस point पे हम arterial system में होते हैं जब हमारा system 100 millimeter mercury पे काम कर रहा है. Okay, and how it changes along with pressure, the volume. Volume changes like this. This is the way volume changes as we change the pressure. So here you can see at 100 millimeter mercury pressure, we have the volume of 700 ml in the arterial system. And as we drop the pressure and we reach to even 0, the volume is not changing much. It goes to 400 ml. So with large change in pressure, the change in volume is less. So this is low compliance. And because of its low compliance, it maintains the flow properly. It maintains the pulsatile flow because of the elasticity.
तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपके आर्टीरियल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम आते हैं वीनस सिस्टम की तरफ। तो वीनस वास्कुलेचर में क्या होता है, द प्रेशर रिमेन्स अराउंड 3 to 5 मिलीमीटर मर्करी हियर एंड 3 to 5 मिलीमीटर मर्करी पे लगभग जो आपका वॉल्यूम रहता है वो रहता है 2000-2500 के बीच में। सो हियर वी आर if we discuss about the venous system. So this is a venous system working at this point, stable point if we consider. अब अगर हम प्रेशर में चेंज करेंगे, how does the volume change? Volume changes from here to here. So as you increase the pressure from 3 to 5 millimeter mercury to even 20 millimeter mercury, the volume rises around 1000 to 1500 ml. So change in volume is large as compared to change in pressure is very less. So here it is high compliant system. And because of this high compliance, it is having high capacity, and because of high compliance, it is the high capacity vessel system. Okay. So अब इसका जो मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है दोनों की कंप्लायंस में, वो अगर हम देखें तो कंप्लायंस का, इफ यू रिमेंबर, वी हैव द फॉर्मूला कंप्लायंस इज इक्वल टू डिस्टेंसिबिलिटी इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम. Distensibility of venous vasculature is around 8 times of the arterial vasculature into original volume is around, we can see here, 2000 से 2500 के बीच में है तो लगभग, और इसका जो आर्टीरियल सिस्टम का है 700 और ये है लगभग 2 से 2500 के बीच में. सो इट इज अराउंड 3 टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम. सो कंप्लायंस जो आता है वीनस सिस्टम का, इट इज 24 टाइम्स हायर देन द आर्टीरियल सिस्टम. सो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जितना स्टीप ग्राफ आएगा उतना ही हाई कंप्लायंस होगा, जितना पैरेलल ग्राफ आएगा उतना ही लो कंप्लायंस होगा. ठीक है. अब इसमें एक और बात अगर मैं आपको डिनोट करूं तो वो आएगा, इफ वी से दैट द इफेक्ट ऑफ ओल्ड एज, इफेक्ट ऑफ एजिंग, हाउ डज इट अफेक्ट द वास्कुलेचर? इट इज गोइंग टू मेक द आर्टीरियल वॉल स्टिफर, राइट? तो स्टिफनिंग के साथ क्या होगा, स्टिफर भी होगा और थिकर भी होगा. ओके. सो उसके साथ क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बढ़ा देगा वेसल का. रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा. ओके. एंड हियर द ग्राफ वुड बिकम मोर फ्लैट. ओके. तो कंप्लायंस और रिड्यूस होते जाएगा. फाइन. सो दिस इज हाउ द कंप्लायंस वर्क्स फॉर vascular system. Now in this segment we are going to discuss the lung compliance. So lung compliance is the change in the pressure. Pressure may be the pleural pressure, transpulmonary pressure or alveolar pressure. Most preferably it is used as transpulmonary pressure. The change in the transpulmonary pressure, per unit change in transpulmonary pressure, will lead to change in volume of lungs, that is called lung compliance. So इसका जो value है that comes as 200 or 220 ml per centimeters of water. Okay, if we do the change in transpulmonary pressure 1 centimeter of water, there is change in the volume by 200 ml. अब लंग कंप्लायंस का स्पेसिफिकेशन क्या है? उसका स्पेसिफिकेशन है कि ये जो कंप्लायंस है ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में अलग अलग वैल्यू शो करता है. एंड लंग कंप्लायंस इज हायर ड्यूरिंग एक्सपीरेशन एज कंपेयर टू इंस्पिरेशन. एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, यहाँ पे इन्होंने ये दिस ग्राफ आई हैव टेकन एज इट इज फ्रॉम गाइटन, तो उन्होंने प्लूरल प्रेशर लिया हुआ है यहाँ पे on x-axis, and we can take the transpulmonary pressure also, and here the lung volume. So here as the pleural pressure is going towards more negative value from -4 to -6, there is, that means inspiration is going to take place, the lungs are going to inflate. So during inflation, this is the change in volume as per change in the pressure. Okay, and during expiration, when the lungs are deflating, this should come back to through this way only towards down.
but it does not happen. The actual scenario is the graph takes another way of compliance during expiration. So this is your, wait a minute. So this is your compliance during inspiration, during inflation, and during deflation. This is the way of compliance. So you are seeing that the graph of compliance from inspiration to expiration, this is moving towards left side. Its slope is high. That means here the compliance is high. Okay. So in inspiration, it is having comparatively lower compliance as compared to expiration, which is having the higher compliance. ठीक है. अब ये difference क्यों आ रहा है compliance में inspiration और expiration में? इसको क्या बोलते हैं? This kind of diagram or graph is called hysteresis. ये आपने बहुत ही familiar diagram है ये, और ये बहुत ही important term है जो इस diagram के साथ हमेशा mention होती है. So this kind of loop is called hysteresis, where inspiration and expiration are following different paths of compliance. Okay, why this difference is there? The difference lies because of the characteristics of the lungs. Number one, the lung parenchyma. Lung parenchyma is elastic structure. It is rich in elastic tissue. Okay. So elasticity की जब हमने बात की थी, elasticity is what? It is the ability of a tissue or any matter to come back to its original position. तो elasticity का जो nature है ये support करेगा expiration को, because in lungs का जो ये alveoli का nature है, they remain like in kinked and coiled state. Okay, this is the nature of lung parenchymal tissue. And this is, suppose this is in the resting condition when no airflow is taking place. अब inspiration में क्या होगा कि आपको ये kinked state को खोलना पड़ेगा. Okay, and expiration में this again, this situations will be attained. So from expiration, from inspiration to expiration, it is easy to go. Less amount of pressure change is required because of the elasticity of the tissue parenchyma. Okay, but expiration to inspiration, it is hard to get. More force needs to be applied. Why? Because this kinked state should be opened, so more force is required. So when more pressure is required and it does less volume change, so the compliance is lower. And whereas in expiration, with less amount of pressure or force, more change in the volume takes place, so the compliance is higher in case of expiration. Right? So ये तो हो गया first reason, that is the elasticity of lung parenchyma. Because of that, the expiration has the higher compliance. एक और reason है इसका, that is the surface tension. Why surface tension? Because in the alveolar lining, okay, this is the lining of alveoli, and here there is a fluid lining present, and here is air, right? So when air and fluid, they meet each other, this is the interface created, and at air fluid interface there is the surface tension happens. Surface tension is at air fluid interface. Okay, what is the surface tension? That is the intermolecular attraction force. Okay, so molecules are attracted to each other, so what they will do? They will try to collapse the alveoli. They will try to decrease the size of alveoli because of the surface tension. These molecules are attracted to each other, तो ये alveoli को एक collapse state बोलो या फिर एक less volume वाली stage में रखना चाहते हैं. So surface tension के कारण क्या होगा कि आपको जब inflate कराना है lungs को, inspire कराना है, तो आपको ये molecular forces को break करना पड़ेगा. और because of breaking of these molecular forces need extra amount of pressure, तो इसीलिए inspiration के दौरान आपको pressure ज़्यादा apply करना पड़ता है, but volume में ज़्यादा change नहीं आ पाता. So that is inspiration has the lower compliance.
सिमिलरली इन एक्सपीरेशन व्हाट विल हैपन, एक्सपीरेशन में क्या है कि वापस से लंग्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रहे हैं, डिफ्लेट हो रहे हैं। तो उस वो जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ एल्वियोलाई, दिस इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इंटरमोलिकुलर फेसेस और टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये दोनों का इफेक्ट बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी एंड बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, ये दोनों का जो इफेक्ट है ये एक्सपीरेशन को सपोर्ट करता है। इसलिए एक्सपीरेशन के दौरान यू नीड लेस अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज फॉर मेकिंग द वॉल्यूम चेंज। ओके, so here this is, we have discussed the principles of compliance, how they are applicable in case of lungs. So here in this last segment of video we are going to discuss the compliance of interstitium. ये जब आप body fluids पढ़ते हैं या फिर कैपिलरी सर्कुलेशन पढ़ते हैं, ईडिमा पढ़ते हैं, उस टाइम पे ये डिस्कस होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो कंप्लायंस है, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फ्लूइड एक्यूमुलेशन, ईडिमा के एप्लीकेशन में इसका रोल रहता है। ओके, सो कंप्लायंस ऑफ इंटरस्टिशियम के लिए देखने के लिए अगेन यू हैव टू सी द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। सो हियर ऑन एक्स एक्सिस देयर इज द interstitial free fluid pressure and on y-axis here is the interstitial fluid volume. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो तरह के segments है इस ग्राफ में. One segment, that is the red one, is of low compliance and the yellow one is of high compliance, which is having a big slope, steep. The low compliance graph is flat. Okay, so जो कंप्लायंस है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. मेजरली ब्रॉडली यू कैन डिवाइड इट लाइक दिस. एट द प्रेशर ऑफ 0 millimeter mercury मींस इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ वी कीप इट द इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, उसके लेफ्ट साइड में ग्राफ जो है वो रहता है फ्लैट. एंड एज यू इंक्रीज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर राइट साइड में इसके, तो ग्राफ हो जाता है स्टीप. लेफ्ट साइड में प्रेशर की रेंज है माइनस में, -2, -4, -6, -8, -10. दैट इज द रेंज प्रेजेंट नॉर्मली इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो प्रेशर है दैट इज क्रिएटेड थ्रू सक्शन फोर्स, तो वो रहता है माइनस की रेंज में. जब ये प्रेशर, अब इस रेंज में अगर प्रेशर है आपका और सपोज वी स्टार्ट विथ -6 millimeter mercury प्रेशर एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है और बढ़ के वो पहुंच जाता है -2 पे, देयर इज नॉट मच राइज इन द वॉल्यूम. दैट मीन्स अगर आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है थ्रू कैपिलरी, द फ्लूइड इज कमिंग इनटू इंटरस्टिशियल स्पेसेस, तो अगर कैपिलरी से फ्लूइड ज्यादा आके एक्यूमुलेट हो रहा है तो ईडिमा डेवलप होगा, राइट? तो अगर आपका फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर थ्रू कैपिलरी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, but interstitial fluid pressure, interstitium का जो pressure है that is maintained in its negative range, तो volume ज्यादा नहीं बढ़ेगा. that means edema will not take place. okay, अब अगर प्रेशर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कि वो पॉजिटिव में आ जाए, +2, +4, +6 में पहुंच जाए, then it completely it is losing its capacity to hold the extra fluid and the fluid will start accumulating and the symptoms of edema would start appear. okay, तो ये ग्राफ होता है कंप्लायंस का इंटरस्टिशियल फ्लूइड की. अब आप बोलोगे कि क्यों है डिफरेंस लो कंप्लायंस एंड हाई कंप्लायंस में? लो कंप्लायंस रेंज जो है दैट इज वर्किंग इन द नेगेटिव प्रेशर रेंज, and in that negative pressure range what happens, interstitial tissue is having proteoglycan meshwork. It is formed by proteoglycan meshwork, and because of the large molecules of proteoglycans, the water present here in the interstitium that is present in the gel form. So along with proteoglycan chains, water, they will create a gel formation in the interstitium. So interstitial fluid remains in a gel form when the pressure is in negative range. But as if the continuously fluid starts coming in या filtration pressure continuously बढ़ रहा है,
it is going to increase the interstitial fluid pressure and which will move more than 0 millimeter mercury +2 +4. यहाँ पे आने के बाद क्या रहता है कि ये जेल फॉर्म की कैपेसिटी खत्म हो जाती है फ्लूइड को होल्ड करने की, एंड gel form will start losing the fluid and more fluid form is available in the interstitium, and once more fluid form is present it becomes movable. So if because of the structural differences in interstitial tissues from gel form to fluid form, the interstitium is becoming low compliant system to high compliant system, and after that the edema symptoms will start appear, not before that. So this is one of the safety factors against edema. ये आप जब edema पढ़ोगे तो आपको ये एक safety factor पढ़ाया जाएगा, and the value of this factor is 3 millimeter mercury. मतलब 3 millimeter mercury अगर आपका net filtration pressure बढ़ के fluid आना start करेगा तो भी edema develop नहीं होगा, because normally जो pressure आपका interstitium का रहता है वो रहता है -3. -3 में को 0 तक पहुंचने के लिए आपको 3 मिलीमीटर mercury pressure बढ़ाना पड़ेगा, बट आपका वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ेगा. So this is your application of compliance in interstitial fluid. I hope I have made myself clear and you are finding my videos helpful. If yes, then do not forget to share my videos to those who may need it and subscribe my channel. Bye bye.